Welcome everyone in lecture number 36 of statistics. The topic of discussion is hypothesis testing about population proportion. So we start by listing the steps of hypothesis testing. Step number 1 is state null hypothesis. सबसे पहले हमें null hypothesis state करनी है. किसके बारे में? पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में ऑब्वियसली. ये पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है यहाँ पर? Population proportion. So we suppose that the value of population proportion is P naught. Here you will write the value that is given in the question. Step number 2 is state alternative hypothesis. Alternative hypothesis. It is denoted by H1 and this may be of this type. This may be of this type or this may be of P less than P naught type. Here we apply two-tailed test. And these two are one-tailed test. Specifically, this is right-tailed test. And this is left-tailed test. Okay. इसे टू टेल टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रिटिकल रीजन दोनों साइड होता है और यहाँ पर क्रिटिकल रीजन राइट साइड होता है और इस केस में क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड में होता है. स्टेप नंबर 3, स्टेट या सेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. आप किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं वो हमें बताना पड़ता है. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही लिखेंगे और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आप 5% या 1% ले सकते हो. स्टेप नंबर 4 इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि हमें पता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का वो नॉर्मल होता है इन शेप में अगर सैंपल साइज 30 या उससे अबव हो and the value of NP is greater than 5. In that case, the value of Z is given by P cap minus P divided by square root of P Q by N, where P cap is sample proportion. P cap is sample proportion. And capital P is population proportion. यहाँ पर हम वो वैल्यू रखेंगे जो हमने स्टेट कर रखी है यहाँ पर. ओके. And N is the sample size. तो ये स्टैटिस्टिक्स हमें कब यूज करनी है? जब एनपी की वैल्यू प्रोवाइडेड n into p
is greater than 5, or the value of n, इक्वालिटी भी आप लगा सकते हो, n into q is greater than or equal to 5. Okay, then step number 5 is draw critical region, acceptance region, after finding the value of z alpha. ये क्रिटिकल वैल्यू है और ये डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने क्या लिया है, अल्फा क्या लिया है और कौन सा टेस्ट आप लगा रहे हो. ओके, एंड देन वी इन द लास्ट स्टेप वी कंपेयर, sorry, it's compare the value of test statistics that is z with critical value. क्रिटिकल वैल्यू क्या है यहाँ पर, z अल्फा. तो अगर z अल्फा सॉरी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, और क्रिटिकल रीजन में फॉल होती है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं. तो बेसिकली वी राइट दैट इफ द वैल्यू ऑफ z is less than mod z alpha, sorry, mod z alpha is less than z, means z lies between minus z alpha and plus z alpha, then null hypothesis is ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर. आई थिंक इट शुड बी mod z is less than z alpha. This is right. Okay, if mod z is less than z alpha, then null hypothesis is accepted. Otherwise, अगर mod z greater than z alpha है, then null hypothesis is rejected. So let's do one problem so that you can understand the concept. Let me state the problem first. A survey of morning beverage market
morning shows that the primary breakfast beverage for 17% of Americans is milk. मतलब मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में जो बेवरेज यूज करते हैं 17% अमेरिकन वो मिल्क होता है और मिल्क प्रोड्यूसर इन विस्कॉन्सिन where milk is plentiful believes the figure is higher for Wisconsin. To test this idea, she contacts a random sample of 550 Wisconsin residents and asks which primary beverage they consumed for breakfast that day. Suppose 115 replied that milk was the primary beverage. Using a level of significance of 0.05,
test the idea that the milk figure is higher for Wisconsin. ओके, क्वेश्चन आपको मैं फिर समझा देती हूँ एक बार फिर से। एक सर्वे किया गया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट के लिए बेवरेज के ऊपर, कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो बेवरेज होता है वो प्राइमरी बेवरेज क्या है, मतलब सूप है या मिल्क है क्या है। तो 17% अमेरिकन का देखा गया कि मिल्क है। मिल्क प्रोड्यूसर विस्कॉन्सिन में है, कोई कंपनी है मिल्क प्रोड्यूस करती है जहाँ पे मिल्क बहुत ज्यादा है, तो ये बिलीव किया, मतलब ये सोचा गया कि शायद हो सकता है कि वहां पर ये फिगर ज्यादा हो सकता है क्योंकि वहां पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर ने विस्कॉन्सिन के जो रेजिडेंट्स थे उनमें से 550 रेजिडेंट्स का कांटेक्ट करके उनसे पूछा कि आप क्या कंज्यूम करते हैं, करा है आपने, मतलब उस दिन आपने जिस दिन उसने सर्वे किया उस दिन पूछा कि आज उन्होंने क्या कौन सा बेवरेज कंज्यूम किया। तो सपोज 115 ने 150 में से 115 ने ये रिप्लाई किया कि मिल्क कंज्यूम किया। तो अब हमें ये टेस्ट करना है कि क्या वाकई में हम ये कह सकते हैं कि विस्कॉन्सिन के लिए जो बेवरेज कंजम्पशन है इन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, जो मिल्क है बेवरेज कंजम्पशन, वो वाकई में उस सिटी के लिए हाई है रादर देन अमेरिकन्स। तो हमें ये आइडिया टेस्ट करना है। तो वी फर्स्ट स्टेट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में होगी, जो कि 17% हमें दी हुई है। तो 0.17 हो गया क्योंकि 17% अमेरिकन दिया हुआ है फिगर, आप ये देखिए। मॉर्निंग सर्वे से बिलीव किया गया कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो बेवरेज है वो अमेरिकन के लिए मिल्क है, 17% अमेरिकन के लिए। तो हमें ये आइडिया टेस्ट करना है कि मिल्क फिगर हायर है विस्कॉन्सिन के लिए। Means alternative hypothesis is होगा P ग्रेटर देन 0.17, क्योंकि ये प्रोपोर्शन हमने जो माना है वो विस्कॉन्सिन के पीपल्स के लिए माना है, रेजिडेंट्स के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं नल हाइपोथेसिस में कि जो अमेरिकन्स का प्रोपोर्शन है वो सेम है फॉर विस्कॉन्सिन। और यहाँ पर हमें जो टेस्ट करना है कि मिल्क फिगर इज हायर फॉर विस्कॉन्सिन, तो इधर प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन 0.17। स्टेप नंबर 1 हो गया, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.05। स्टेप नंबर 4, z is equal to p cap minus p over square root pq by n। p cap आपको क्वेश्चन में गिवन है, p cap here is 115 divided by 550, which is 0.209. 0.209 minus 0.17. P is here hypothesized value, and PQ by N is 0.17 into 0.83
divided by 550. This comes out to be 2.44. Next step is we draw critical and acceptance region. Here we have population proportion, which is 0.17, and because this is right tail test, so critical region will be on the right hand side. This value is 0.05, so we subtract 0.05 from 0.5. Okay, so that give us this area, and this area is 0.5 minus 0.05, which is 0.45. So we look for 0.45 in the table. That gives the value of Z alpha here, which is 1.645, this value. Uh, this is critical region. Let me mark all the regions. This is critical region. This is acceptance region. This area is 95, 99, sorry, 95%. Okay, so we compare this value with this value. This is critical value and this is test statistics value. As you can see, 2.44 is after 1.645. That value comes in this region. So null hypothesis will be rejected. We will write here step number 6. Two 2.44 is greater than 1.645. 1.645. So null hypothesis is rejected. Means we cannot say that जो विस्कॉन्सिन सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए मिल्क का जो बेवरेज का जो कंजम्पशन है वो 17% से ज़्यादा होगा, हम ये नहीं कह सकते. ओके, तो इसमें आपको ये भी चेक करना है कि एन और पी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, क्योंकि एन बहुत लार्ज है इधर 550 और पी की वैल्यू है 0.17. So when you multiply it, it's definitely greater than 5. Okay. So we'll do the next problem. Let me state the next problem. Suppose you are testing H naught where P is equal to 0.29 versus H1 where P is not equal to 0.29. A random sample of
740 items shows that 207 have this characteristic. ठीक है, with 0.05 probability of probability of committing a type 1 error, committing type 1 error means level of significance आपको given है 5%. Test the hypothesis. So we solve this. Null hypothesis already हमें state की हुई है क्वेश्चन में, ऑल्टरनेटिव भी स्टेट की हुई है, अल्फा हमें गिवन है, डायरेक्ट हम z कैलकुलेट करेंगे, p cap 207 divided by 740, p is 0.29. इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा 0.29 into 0.71 divided by 740. So 0.2797 minus 0.29 whole divided by square root of 0.00027. When you solve it, you will get minus 0.0103 divided by 0.0164. That will give us z is equal to 0.628. So this is our first step, this is second, this is third, this is fourth. Fifth one, क्योंकि alpha is 0.05 and this is two-tailed test. So we divide this 0.5 into two parts and this total area is 95%. This is acceptance region. And this area is
5 by 2%, that is 2.5%. This is also 2.5%. This is critical region. This is critical region. This value is capital P here. This 0.29. We find this value of Z alpha by 2. So we subtract 2.5 from 50%, that is 0.5. So this is 0.4750, that is 47.5%. So the value of Z alpha by 2 from table comes out to be 1.96. This is minus 1.96. So in the next step, we compare the value of Z, that is 0.628, lies between minus 1.96 and plus 1.96. So we write here mod Z alpha mod Z is less than Z alpha. This implies null hypothesis is accepted. Okay, thank you very much. आपको अगर लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा and like, share my video. Thank you very much.